let's talk about some do's and don'ts. Great. So ये मेरी दो स्लाइड्स हैं, स्लाइड नंबर 16 एंड 17. ओके. क्या करना है, कैसे करना है, सबको पता है. क्या नहीं करना किसी को नहीं पता, इसलिए हम ये सेशन कर रहे हैं. Great. Simran, you want to pick up one of your favorites one from this, and then we can discuss one or two or three or four, whichever you like. Sure, sir. So I think one thing that I covered already is think like a manager, like think like a leader. So I'm going to leave that aside. And know each and every line on your resume. This is very important. This goes in hand with whatever you say in the interview as well, because what you say, what's coming from you, you should know about that. If I am writing that I worked at an XYZ institute and I worked in an XYZ role with ABC project, if I don't know all everything about it, then what did I do there? I don't want people in my school who just care about what their responsibilities are, who don't take initiative, who don't go like above and beyond. So those are the things that are like a no, sort of a red flag in an interview. So definitely know each and every line, because it's coming from you. If you don't know your story, how are they expected to trust you on the other things that they're telling you? Know your story. बहुत ही बढ़िया. Great यार. Thanks for covering these 2 points. I'll just start and pick it up other ones as well. So number one, don't lie. Exaggeration is fine. Okay? Don't lie. So if you are not a topper in the class, you will not say I was the top 1% in the class, right? You can always say I was in the top 3%, 4%, 10%. पर अगर आप 3% कर रहे हो तो आपका मैथ रेडी होना चाहिए. 3% का मतलब होता है रैंक 1, 2, 3. समझा? तो तुम्हारी क्लास में अगर बच्चे 80 थे तो 3% समझ लो भाई वो कितना होता है. तो 2.4 समझ रहे हो. तो भाई ये नहीं बोलना है. ये चीज़ पता नहीं क्यों सिखा देते हैं. बी स्कूल्स के अंदर भी हमें सिखाते हैं. देन दे मेलो अस डाउन आफ्टर योर फर्स्ट व्हेन द एसआईपी स्टार्ट दे मेल यू डाउन एंड देन यू से नहीं लिखना है यार, वो सब नहीं करना है. सो डोंट लाई, एग्जैजरेट करिए. या As an I was in the HR society of FMS WSL, right? So I helped students, juniors there. I've seen people write that they were in the top rankers during school. That doesn't hold importance anymore. Like 12th, you topped your school, that's an achievement. Great. But if you came first in 7th, 8th, 9th, that's a little irrelevant to who you are as a person right now. Just because you had some achievement and you want to put it there, that's not true. True that. So that's not going to fit in. True that. So स्कूल की जो भी बातें हैं, apart from being a head boy or a head girl, just a small college topper बोल के निकलना तो निकलना, but just don't be sir in 5 subjects, I was in 3 subjects in 10th, 11th में 2 subjects में था, 12th में. This is a no-brainer. Now think like a manager for sure. We are hiring manager. We're not hiring for an undergraduate. Now you've done your undergraduate, so most of his story is going to be on that front as well. Next one, this we already covered. Always be ethical. हाँ भाई. एथिकल होना ज़रूरी है. एवरीवन विल चैट येस और नो. एवरीवन होना ज़रूरी, एथिकल होना ज़रूरी है, हाँ या ना? येस और नो. ओके, आई गिव यू एन IIM अहमदाबाद क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स सी यू कैन डू इट. फिर यू कैन चेंज योर आंसर इफ यू वांट टू डू स्पेसिफिकली फॉर SPJIMR. नहीं सारे कॉलेजेस में होना ज़रूरी, बट थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू ट्रैप यू टू माई प्रीमाइसेस व्हिच आई एम गिविंग यू. सो योर IIM अहमदाबाद इंटरव्यू इज गोइंग ऑन. यूर इन अ बाइक राइट नाउ. हमने डिस्कस किया था. आप बाइक पे जा रहे हो और बाइक पे जा रहे हो, फुल स्पीड पे जा रहे हो, और साथ में पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया. एंड पुलिस वाला बोल रहा है भाई मेरे को 100 रुपये की पत्ती चाहिए अभी. ठीक है, एंड इट्स ऑलरेडी 8 o'clock in the morning and your interview is at 8:30 and he's saying नहीं तो बाइक रख दे भाई. एंड देन और अगर आपने नहीं किया तो आप लेट हो जाएंगे. वुड यू गिव 100 rupees to the police guy to get your interview done? Else your interview is going to go. Yeah, else you screw up your IIM Ahmedabad. Okay, great. हितेश बोल रहा है yes, अतुल बोल रहा है yes, 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 no, no, I will give, good. बहुत बढ़िया. नो ब्रेनर, डेफिनेटली आई विल गिव इट. बहुत बढ़िया, गुड. सो एक पैसा नहीं देने का किसी को. दिस इज कॉल्ड ब्राइब. ओके, दिस इज कॉल्ड ब्राइब. थिंक लाइक अ मैनेजर. विल मैनेजर एवर गिव अ ब्राइब? हाँ या ना? थिंक मैनेजर विल गिव अ ब्राइब? नो. वुड यू अलाउ वंस योर मैनेजर, तुम्हारे नीचे वाला पप्पू ब्राइब दे रहा है किसी भी काम करने के लिए? नो.
विल रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ पुलिस. हाँ थोड़ा एक्सट्रीम हो गया. सो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपने गलती करी है फॉर श्योर, बट इसका एक बहुत ही आंसर हो सकता है, बड़ा ही डिप्लोमेटिक आंसर जो कि बेस्ट आपको देना चाहिए. सर आई ट्राई टू कॉल अप आई एम अहमदाबाद, explain the situation and tell them can we postpone it and also accept my mistake of saying that मेरे से गलती हुई है. You will not be unethical come what may. Understood everyone? Is it clear? Yes or no? Don't be unethical come what may. हाँ किसी की लाइफ बचानी है वहाँ पे अनएथिकल हो सकते हो. अंडरस्टूड? जिंदगी बच रही है वहाँ पे खो सकते हो, वहाँ पे झूठ बोलना है, नहीं तो पकड़ लेगा, ऐसे थोड़ी करेगा तू, ऐसे थोड़ी करेगा. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ किसी की लाइफ बचानी है. सो सिमरन कैन यू थिंक ऑफ समथिंग, किसी की लाइफ बचानी है तो उसके लिए झूठ बोलना है तो. Nothing that comes from the top of my head. Okay. So I think say for example you don't have money, so but you to ask money from your dad because तुम्हारा फ्रेंड को पैसे चाहिए, उसकी मम्मी बीमार है एंड उसको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रही एंड मम्मी इज़ लाइक कि शी रियली नीड्स मनी, नहीं हुआ तो शी इज़ गोइंग टू डाई, राइट. तो एंड यू नीड टू हैव योर ट्यूशन फीस टू बी डिलीवर्ड, तो डैड ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए 1000 रुपीज़ रखे हुए हैं. एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग ओल्ड स्कूल. सो वुड यू टेक दैट 1000 रुपीज़ एंड गिव इट टू योर विदाउट टेलिंग योर डैड? हाँ भाई, येस और नो? Yes or no? What do you do? Yes or no? Yes, right? Yes. Now you got it. No. वहाँ पे ethics. तो जहाँ पे जान की हानि हो वहाँ पे देख लेना. Next one. Have a story in place. Last 7 minutes for the day. Have a story in place. सिमरन ने बोल दिया story. Story मतलब आपकी story. पहली बार tell me something about yourself. हम ये discuss करेंगे अभी एक हफ्ते के बाद. But it should be in one particular order, which is always like your school, your college, your work experience. Your school, college, work. School से थोड़ा सा start करो. You want to start with the family, you can start with the family. Some people do it other way around as well. They do work experience से start करते हैं and they come to then college, then they come to school. ठीक है. Let's discuss. Which is better भाई? A or B? Which is better? A or B? A. Simran, which is better? What do you think? So, there's no one right answer to this. In my opinion, what's better is where you can leave the most impact. So once you enter the interview round, if you think starting में impactful चीज बोलने से, it would be better off for your case. Start off with whatever you think will create the most impact. And same, if you think कि you want to end with just giving a banger line or a banger sentence and have your interview be directed towards that itself. Do that. It's not about a particular chronology that you should follow. It's what is your intent with your TMA बहुत बढ़िया. to drive your interview. Say you represented India in your school level and you want to say it with the last line and then you can do this as well. Yeah, ये बहुत बढ़िया है. But normally जनता स्कूल से कॉलेज में होशियार होती है, कॉलेज से वर्क एक्सपीरियंस में और होशियार होती है, राइट. और तुम्हारी स्टोरीज कॉर्पोरेटाइज थोड़ी ज़्यादा होती हैं, राइट. नॉर्मली जनता, हम जो तुम स्कूल में थे कैसे लल्लू थे, है ना, पता नहीं आपका, पता नहीं, बट मैं तो था. तो स्कूल के बाद देन यू बिकम स्मार्टर, देन यू कॉलेज में भी तुम लल्लू होते हो, बट वो बाद में पता चलता है. एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग आउट, तो यू नो द डिग्री ऑफ लल्लूनेस इज गॉन डाउन एंड यू बिकम स्मार्ट. सो यू स्टार्ट टॉकिंग बेटर अबाउट थिंग्स एज वेल एंड द पैनलिस्ट is more keen of listening to this. At the same time, if your school story is really, really cool and you can bring some emotional touch to this, that's really amazing. Emotional touch बहुत ज़रूरी है, पर sympathy और emotional touch में थोड़ा सा फ़र्क है, right? Some people, how many of you have gone through something bad with your parents or yourself in the last 1 year? हाँ भाई, yes or no? कौन क्या हुआ है अपना? बहुत बढ़िया. पूजा का हुआ है, ओके. बाकी पुलकित का हुआ है, बहुत बढ़िया. सर्जरी हुआ है, ओके, गुड. नॉर्मली प्लीज कीप इट आउट, या कीप इट आउट. एंड ब्रेकअप हुआ है, बहुत बढ़िया. कीप इट आउट. थिंक लाइक अ मैनेजर. हाँ, थिंक लाइक अ मैनेजर. ब्रेकअप की बातें यार, सबके ब्रेकअप होते हैं आजकल यार, क्यों नहीं सिमरन, है ना. मेरा भी हुआ है, सिमरन का भी हो चुका है, सबके होते रहते हैं, वो छोड़ दो. हाँ, यंगर सिस्टर गॉट कैंसर. ग्रेट. So great is the wrong word. So I'm just looking for such lines that these are really, really bad things which has happened to you, but I don't want as a panelist to have sympathy. Even if you're not trying to gain sympathy out of it, मुझे लगना शुरू होगा यार वो तो सैड स्टोरी बता रहा है अपना, राइट. यार आपके पास 10 मिनट का टाइम है और उस 10 मिनट के अंदर एज अ सैड स्टोरी नहीं सुनाना किसी को. उसको अपनी अच्छी स्टोरी बताओ, अपनी पॉजिटिव बताओ. जब मैं तुम्हें अपनी कॉलेज की हुडी पहनाऊंगा तो FMS की SP जैन बॉम्बे की, तो लड़का मतलब बढ़िया होना चाहिए. I know a lot of chatters are coming. With due respect to a lot of people have lost their parents as well. Father has lost his job. You've lost your parent as well. Last August के अंदर. Deepak, I understand, but avoid if possible.
Yes, if it's a rags to riches story, after the demise of my father I did that, banger, मज़ा, अगर वो कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बट मैं तो बोलूँगा अवॉइड करो यार. हाँ, मुझे लगना चाहिए. क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस नहीं? यस और नो? Can you give a brief example of the stories? Okay, great. So brief example of the story, recent one. So यहाँ पे बॉम्बे में ना हम एक वो प्रोजेक्ट करते हैं, मैं बड़ा लो की रखता हूँ. अभी तो इंस्टाग्राम पे वैसे डाल दिए, तो वो ना हम लोग सब सेंटा क्लॉज बन जाते हैं. तो मैं भी सेंटा क्लॉज बनता हूँ बाय द वे. सो मी अलॉन्ग विद 100 पीपल वी ऑल बिकम सेंटा क्लॉजेज. And there are some deaf people, some hearing impaired people, some blind people, उनको भी सेंटा क्लॉज बनाते हैं. बिकॉज उन्होंने ना हमेशा गिफ्ट लिए हैं, कोई आके उनको दान कर रहा है, बट नाउ दे गो एंड गिव अवे द गिफ्ट एज वेल. वो भी जा रहा है, ब्लाइंड बंदा जा रहा है, डेफ बंदा है, वो सेंटा क्लॉज बन रहा है, राइट? एंड इट्स नॉट अबाउट गिविंग अवे गिफ्ट, चलो वो तो सही बात है, बट द स्माइल व्हाट यू कैन गेट ऑन द फेसेस ऑफ द सेंटा क्लॉजेस एज वेल, एंड द स्माइल व्हाट यू गेट इन द पीपल्स फेस ऑल्सो, it's really killing, right? So rather than me harping on saying that यार वो 10 घंटे में 100 Santa Claus को 100 gifts each, 10,000 gifts are distributed on the streets of Bandra, ये हम प्रोजेक्ट करते हैं. So you understand, so these numbers are really important, but the story which I try to tell you regarding what I did, so and I tell my team also, once you become a Santa Claus you're going to come here every year. तो वो एक नशा है, मैं इनको बोलता हूँ, ऑफ गिफ्टिंग वे पीपल एज वेल. क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? यस और नो? समझ आ रहा है, हाँ या ना? समझ आ रहा है, यस और नो? ओके, अंडरस्टूड. सो एनी विच वे, सो योर इमोशनल स्टोरी कुड बी देयर. ओवर नहीं करना है, बट इन्वॉल्व पेशेंस. व्हाट आर इमोशंस? इमोशंस आर सैडनेस. वैसे तो नवरस होते हैं, किसी ने अगर ड्रामा सीखा होगा उनको पता होगा, नवरस तो 9 रस होते हैं. सैडनेस, एंगर, हेट, लव, jealousy, angst. Angst is like shit yaar. Angst is not sad. Angst is like shit yaar. So if you guys can bring in a very subtle way, it's also really good. Never utter a word which I don't know about. Know and each every line. आपके शब्द मुंह से कुछ भी निकल रहा है तो आपको पता होना चाहिए. Know each and every line resume. Don't assume anything. As you me. तुम भी गधे, हम भी गधे, सब गधे हैं भाई. As you me. ठीक है सर. योर लाइन नेवर टू सेव मनी ऑन एजुकेशन वॉज एवर ओवरवेलमिंग. आई ट्राई टू सेव मनी ऑन द MDA गुड़गांव फॉर्म, बट माई पेरेंट्स ट्राई टू फिल आफ्टर लिसनिंग योर लाइन. ओके, ग्रेट. सो ये भी मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ कि माई डैड ऑलवेज टेल मी लाइक पेंसिल, पेन और एजुकेशन पे पैसे नहीं बचाने. तो मैं IIT के पहले 3 दिन पहले भी किताब लेके आया था. सो पीले रंग की किताब थी, कोई तो किसी ने बोला यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो 300 रुपये किताब, दिस 2001. So मैं लेके आया, फिर भी IIT नहीं हुआ, but any which ways try to bring it up. Great. So how important, Simran, I'm going to ask you this question, small details are important. Do you think it's required when they're giving their answers, if an interview panelist is asking, well, describe me your job, and they're talking about numbers, how much dollar benefit they have done, how much lean implementation they've done, they're talking about all these things, or they get into the finer details of things, which is better, and कैसे करने चाहिए answers? Sir, I think in the question that you posed, the example covering all bases would be a good idea, because that shows that you are involved in all fronts. You know what impact you're creating, but at the same time, how the team is actually working towards it. So smaller details in those kind of examples would be what kind of problems that the team had. If you who are going for an interview are at a manager position, what kind of problems your team had? How did they solve it out among themselves? Or what kind of problems do you think they reached out to the leadership for? So there are a lot of learnings in these small details as well that most people try to overlook. You need to show that you want to gain, never miss an opportunity to learn from anywhere, anyone, or anything. Understood. Great. So small details, thinking out of the box works great. Super. That's great. So जितना small details होंगे उतना लोग ज़्यादा connect कर पाएंगे. Yeah, you guys can. I'll explain this dropping the ball. This is the last point for the day. Time is already up. But हम लोग यहीं से continue करेंगे. जितना smaller details, like for example, so I end my last line in the interviews. Now I don't give any interviews. Last interview which I gave was like Oxford interview for my second MBA, which I got through. Which was like, I recently got an award from President of India for a not-for-profit which I do. That's it. So that was like a bomb dropping. So President of India, it was not an award. Let me correct myself. It was a facilitation. So I got facilitated.
So this intrigues the panelists. Oh, is it? So you do a not-for-profit as well. What is it all about? I thought you were a GE guy. You were a corporate guy. When I applied, I used to be working in GE at that time. So this is the intriguing thing. और एक बार फिर वो मेरे साउंड ऑफ साइलेंस के अंदर आ गया तो फिर तो मैं उसको पक्का भाई एंजॉय करते जाइए, करते रहिएगा, एंड वी हैव लॉट ऑफ फन विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स. A big thank you to Simran ma'am also for working hard with us, and we have a lot of fun